So all the formulas required to solve the numerical of chapter number 8. V is equal to n into lambda, or V is equal to lambda yt. Okay. Frequency मिल जाएगा इधर से वेवलेंथ, ये फॉर्मूला है V by n, और lambda is equal to V 1 by n को अपन T लिख लेंगे, where n is the frequency. Okay. Number 3, velocity of sound wave. According to Newton's formula, root of E by rho, according to Laplace formula, gamma into P by rho, where gamma is Cp by Cv, or you can say PV is equal to nRT or PV upon mass. Rho is equal to mass upon volume. Mass upon volume को replace कर दिया. And also PV is equal to, for ideal gas, PV is equal to nRT, n number of moles. Factors affecting velocity. Temperature, also Kelvin में convert करना तो 273 plus T1, 273 plus T2. Velocity of sound at T degree C, Vt is equal to V0, root of 1 plus T by 273. Loudness of sound, L bell log to the base 10, I divided by I0. Doppler effect, source approaching
and stationary listener. N equals to, इसका अपन ने प्रूफ भी देखा था, V upon V minus Vs. Source receding from a stationary observer. लिसनर भी बोल सकते हो. N equals to N0 upon V plus Vs. दोनों फॉर्मूला अपन ने प्लस माइनस में लिखे ही थे ऑलरेडी, बट ये ज्यादा स्पेसिफिक है, so there will be no confusion when to apply minus and when to apply plus. When the source is approaching listener, we have to subtract. When the source is receding listener, we have to add. Okay, so there will be no confusion now. Listener approaching, a stationary source, so we can say N equal to N0 plus equal to V plus VL upon V, and listener receding from a stationary source माइनस हो जाएगा N0 V minus VL upon V. ठीक है. नंबर 5, both source listening approaching each other, both approaching each other. N equals to N0 V plus VL V minus Vs, and both receding. Both preceding each other, उल्टा हो जाएगा. N equals to N0 V minus VL upon V plus Vs. Done? Okay. So question number 3 first sum. तो ये डॉपलर इफेक्ट के टाइम पे अपने को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा साइन का, बाकी तो सब फॉर्मूला वैल्यूज डाल के खत्म. इसमें सिर्फ प्लस माइनस का साइन का ध्यान देना है, कौन अप्रोच हो रहा है कौन रिसीड हो रहा है. ऑन डिपेंड ऑन दैट वी हैव टू चूज द साइंस. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द डॉपलर इफेक्ट टाइप सम. A certain sound wave
in air has a speed of 340 meter per second. Speed देख रखा है 340 meter per second and a wavelength of 1.7 meter. Speed मतलब v 340 meter per second. Wavelength मतलब lambda 1.7 meter. For this wave, calculate the frequency, and second one is the period. Okay, chalo formula. Frequency का formula n is equal to v upon lambda, and period का formula time period t is equal to 1 upon n. N निकालो 1. Formula already everything is given. Substitute the value and find out. N is equal to v मालूम है, n lambda मालूम है, t equals to 1 upon n. Solve and tell me the answer. I'm just coming. I'm just coming. Hello. So first answer is 200, second one is 0.0005. Second, perfect. Sabash. Next. A tuning fork of frequency a tuning fork of frequency 170 hertz
मतलब फ्रीक्वेंसी n दे के रखा था को और लेमडा दे के रखा है 2 मीटर। सेम फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला। हाँ आ जाएगा इजी। 340। शाबाश शाबाश, क्या इजी सम देते हैं लोग। लिखूं क्या नहीं लिखूं? लिखूं या बोर्ड पे चलेगा? ओके कर अब, लेकिन तू सॉल्व कर ले, मैंने नहीं लिखा, तू सॉल्व कर ले। फॉर्मूला लिखकर। अच्छा फॉर्मूला लिखो, n इंटू लैम्डा v इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। हाँ फॉर्मूला लिख कर करना है ना बाबा, ओरली थोड़ी मार्क्स मिलने वाले। Sudden. Done. Yeah. An echo sounder in a fishing boat receives an echo from a shoal of a fish 0.45 seconds after it was sent. नंबर 4 टाइम देके रखा है 0.45 सेकेंड after it was sent. If the speed of the sound in water v is 1500 meter per second, how deep is the shore? Depth d निकालना है। चलो सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, निकाल दो। सबको डिस्टेंस मिलेगा, डिस्टेंस इज नथिंग बट द डेप्थ, खत्म। सो इजी। सो डिस्टेंस is equal to speed into time. No need to convert anything. आया कितना? आया आंसर? Answer? What is the original answer? 337.5 meter deep. Yeah, correct. Number 4. This was number 3rd, now? Now this was number 4. Yeah. So this is number 4. A girl stands 170 meter away. Distance लेके रखा है 170 meter. 170 meter, 170 meter away from a high wall and claps her hands at a steady rate so that each clap coincides with the echo of the one before. If she makes 60 claps in 1 minute,
What value should be the speed of sound in air? इसने frequency दिया 60 claps in 1 minute. What is the speed of the sound in air? Speed of the sound in air. Question समझा क्या वो देखो. Now she moves to another location and finds that she should now make 45 claps in 1 minute. To coincide with the successive echoes, calculate her distance from the new position from the while. क्योंकि स्पीड तो उतना ही रहेगा. सेम फॉर्मूला कंसेप्ट तो सेम आएगा. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होगा, इसमें और कुछ है नहीं. ओके अभी 60 क्लैप्स इन 1 मिनट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना. 60 क्लैप. द गर्ल क्यों लिखो, अपन गर्ल लिखो ना भाई. गर्ल गर्ल produces 60 clap in 1 minute, that is 1 clap per second. बराबर है क्या, देख लो. So from formula V is equal to 2 into S upon T for an echo. एक जाने को एक आने को, बराबर है. So this will be 2 into S is 170 divided by 1. Time is 1. So आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड. बहुत बार ये 2 हम लोग लिखना भूल जाता है, क्योंकि एको का कंडीशन क्या है, जाने और आने को टाइम मांगता है. तो डिस्टेंस जाएगा, टकराएगा, रिटर्न आएगा, तो ये 2 लिखना जरूरी है, ये हम भूल जाते हैं. नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, 45 क्लैप किया. सेकेंड क्लैप. गर्ल produces 45 clap in 1 minute, that is 0.75 clap per second. Again V is equal to same formula 2S by T. V कितना था 340. 2 into S by T कितना है 0.75. 340 into 0.75 upon 2 is equal to S. S कितना है क्या पता. कुछ भी डाउट है तो पूछो. या 255 ना बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Sound wave A has period of 0.0015 second and wave B has a period of 0.0. ये तो ओरली हो सकता है, कौन सा आएगा बताओ. 1/n होता है ना. टाइम इज 1/n. जिसका पीरियड कम उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा. यस खत्म. At what temperature will the sound in at what temperature will the speed of sound in air is 1.75 times the speed of NTP. हाँ सॉल्व करना पड़ेगा.
Number 7. ये मम्मी कौन सा ये नंबर 5 नंबर 6 की जगह पे नंबर 7 दे दिया उसने शुड बी नंबर 6 ना क्या क्या दे के रखा है बोलो भाई velocity of air is 1.75 times velocity in air is 1.75 times the velocity at NTP की STP लिखो उसको standard temperature pressure make the correction so temperature at standard temperature is 273 Kelvin 0 degree Celsius temperature at STP is 273 Kelvin this we know okay to find temperature of air formula V is directly proportional to square root of T. Calculation V equals to VSTP upon V air equals to TSTP upon T air. So V air, so VSTP will write VSTP. V air we can write 1.75 times of VSTP. STP is 273 upon T air. Okay. ये और ये कट हुआ 1 divided by you can see this as 100 upon 175 root of 273 upon T air squaring both sides so you can get squaring both sides 100 upon इसको reduce कर लो कितना आता है देखो 100 को 25 4 जा 25 125 6 7 7 4 by 7 का square equals to 273 upon Tn 16 by 49 273 upon Tn so Tn equals to 273 into 49 upon 16 जो आंसर आ रहा है वो चेक क्या नहीं समझो बताओ आंसर आएगा केल्विन में उसको 273 से माइनस करोगे तो सेल्सियस में आ जाएगा डिग्री सी
by 63. Yep. Celsius. Yeah. And 8. Very. Yep. Shabash. A man standing between two parallel cliffs fires a gun. He heard two echoes, one after 3 seconds and other after 5 seconds. एक echo सुनाई दिया 3 सेकंड के बाद, दूसरा 5 सेकंड के बाद. The separation between two cliffs is 1360 meter. Distance 1360 meter. Time first echo कब सुनाई दिया? After 3 seconds. First echo is 3 seconds and the second echo is 5 seconds. Now we have to find out velocity, speed of the sound. To find speed of the sound, same formula. Speed is equal to Sabash. Speed is And you'll have equal to to add both the fine points. yep. नहीं उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना. डिवाइड बाय 2 करके ऐड करेंगे ना बेटा. 3 सेकंड जाने को और आने को लगा तो टोटल टाइम 1.5 सेकंड ही होगा ना. नहीं समझा? समझा. Time for first echo is 3 seconds. So time taken by sound to travel given distance T1 is equals to 3 by 2 is 1.5 seconds. Time for the second echo is 5 seconds. Therefore, time taken by sound to travel given distance T2 is 5 upon 2 is 2.5 seconds. So total time taken equals to T1 plus T2. 1.5 plus 2.5 will be 4 seconds. Now V is equal to, we know that, डाल दो distance upon time. Yes. Why are you doing that to the finger? Mental or what? So next.
if the velocity of sound in air at a given temperature given place, sorry, question में फिर से पढ़ता with velocity of sound in air at a given place on 2 different days of a given week are in the ratio 1:1.1. रेशियो दे के रखा है 1:1.1 रेशियो दे के रखा है इसका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का 2 डिफरेंट दिन का रेशियो assuming temperatures are on the 2 days to be same, what quantitative conclusion can you draw about the condition on the temperature same? क्या कंक्लूजन आएगा बताओ क्वेश्चन समझा रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर on 2 different days are given as 1:1.1. Given the temperature is same, then what conclusion is drawn? Why the ratio is 1:1.1? So let V1 and V2 be the velocity. On day 1 and day 2 respectively. Okay. So V1 is to V2 is 1 divided by 1.1. Okay. There is no calculation here. We have to find out the. Now we know that temperature is same, so only density might cause some difference 1 by rho. So let rho1 and rho2 be the densities of air on day 1 and day 2 respectively. So we can say V1 by V2 equals to rho2 by rho1 or rho2 by rho1 is V1 by V2 का square. So we can also write this as नहीं समझ में आ रहा तो रोक देना V1 by V2 rho2 by rho1 1 divided by 1.1 का square rho2 by rho1 1.21. So rho2 or you can say cross multiply करोगे rho1 1.2 times of rho2, isn't it? Rho1 into 1 will be rho1, this into this. This is our conclusion. So rho1 is greater than rho2 and therefore V2 is greater than V1. So अपना conclusion क्या लिखेंगे इधर? Velocity of sound is greater on second day than on the first day. Yes. Any question? Any doubt? Done. Done? Okay. Yeah. Next is a police car travel towards a Doppler effect पे आ गया सब.
इजी है। चलो ये वाला सम खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 नंबरिंग में मिस्टेक है सर। ध्यान से सुनना। A police car travels towards the stationary observer at a speed of, मतलब ये सोर्स है, 15 मीटर पर सेकेंड। लिसनर स्टेशनरी है। The siren on a car emits the sound of frequency 250 hertz V0 and 0. Calculate the recorded frequency. The speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करने बोला है? n। कौन सा फॉर्मूला आएगा? सोर्स मूविंग, लिसनर स्टेशनरी, सोर्स अप्रोचेस लिसनर, सोर्स अप्रोचेस लिसनर। फॉर्मूला बताओ। v अपॉन v माइनस वी एस। डाल दो वैल्यू, हर एक चीज आपको दे के रखे। I'm sorry. I'm sorry. 261.5. शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। A sound emitted from the siren of an ambulance has a frequency of 1500 hertz. Yes. Sound source है वो। Sorry. VS रहेगा। Speed of the sound is 340 meter per second. And 0, 1500 hertz. The sound emitted from the siren of ambulance has frequency of 1500 hertz. The speed of sound is 340 meter per second. Calculate the difference in frequency heard by a stationary observer if ambulance initially travels towards and then away. Towards और away दोनों का बीच का डिफरेंस पूछा है। समझा क्या? जब इनिशियली वो टुवर्ड्स जाएगी तब, और जब उससे छोड़ के जाएगी तब, दोनों का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना है। Difference in apparent frequency. Now we say this is NA minus NA dash. Okay. और क्या देके रखे? Velocity of sound in air is always 340 meter per second. VS 30 meter per second. 30 meter per second. VS 30 meter per second. Okay.
Now, first, when the ambulance moved towards the source, the formula will be Na equals to N0 upon into V minus Vs, and when it moves away, recede करेगा, Na dash लेता हूँ N0 upon into V upon V plus Vs, डाल दो फॉर्मूला, Na निकालो, Na dash निकालो और फिर दोनों का डिफरेंस निकालो, दैट्स इट. तुम्हें चहा गरम करायची हो. Yep. Done? Yeah. Okay. So this is the end of chapter number 8. Next lecture will start new chapter. कल कौन सा टेस्ट है? Vectors. Okay. चलो. So the portion हाँ. there's that new PDF which has come. Like many people have sent it that a new portion has been cut. So is it authentic or like? So we will do now. We will do everything because only for this year it is cut. What about 12? Because there is some topic which is important for 12. So whatever we feel कि ये कट करना नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा वो उड़ा देंगे. Otherwise अपन पढ़ेंगे.